हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योरिटी विजन चैनल और मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वामी स्वागत करता हूं CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स में। राइट, सो हमने जो कल डिस्कस स्टार्ट किया था सीरीज सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। राइट, जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या आपको सीखना है। जस्ट एक रिकैप करना चाहेंगे जहां पर हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट समझा था। वी अंडरस्टूड अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी समझा था, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, अप्रोचेस क्या रहने वाली है साइबर सिक्योरिटी के लिए। राइट, एंड देन अंडरस्टूड द अडेरेंस एंड प्रमोट प्रोफेशनल एथिक्स, जहां पर हमने ISC स्क्वायर कोड प्रोफेशनल एथिक्स क्या होती है। वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड देन CIS ट्राई, जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी का हमने डीप में डिस्कशन किया था। एंड देन उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस पार्ट देखा था, GRC हाउ इट वर्क, कैसे फंक्शन करता है, उसका मेजर फोकस ऑफ गवर्नेंस हमने चेक किया था। एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कंप्लीट GRC फ्रेमवर्क। सो दोस्तों, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं, बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट IT सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड मिशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। गोल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव से हमको क्या समझ में आता है दोस्तों। पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। राइट, सो ऑब्जेक्टिव्स में आप समझ सकते हो कि द डेफिनेशन ऑफ गोल्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एज below is given here. So let's focus on the objective. Okay, so objective मतलब एक milestone रहेगा, the map used to reach the goal of the organization. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एक माइलस्टोन रहता है, एक प्रोजेक्ट रिलेटेड भी माइलस्टोन रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू माइलस्टोन रहेगा। जैसे कि आपका वो पार्ट आता है, ऑपरेशंस का पार्ट आता है। राइट, कैसी सिक्योरिटी रखनी है, कैसी आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, उसके उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, उसकी एक्टिविटीज क्या रहेंगी, प्रोसेस क्या रहेगी, बेसलाइन क्या रहेगी, उसको कैसे गवर्नेंस किया जा सकता है। तो एक पूरा स्टैटिक, एक पूरा कंप्लीट माइलस्टोन तैयार होता है कि दिस इज हाउ वी नीड टू अचीव इट। नाउ लेट्स से इन द इयर्स ऑफ 2020 टू 2015 ये एक माइलस्टोन बनाया जिसमें हमको ईयर वन में व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, वी नीड टू फोकस ऑन आवर काउंटर मेजर्स, we need to focus in the next year risk management, we need to focus on that, regulatory compliance हमारा कैसा रहेगा, we need to focus on that, this kind of रहेगा। And then after you have then operation, so how we are going to manage the operations, what would be the requirement, how many people, resources, etc, etc, there's all things you require in the objective। मिशन की जब हम बात करते हैं तो मिशन, व्हाट वुड द मिशन, द प्रोवाइड्स द ओवरऑल कॉन्टेक्ट्स, like what the organization wants to accomplish। Let's say for example Microsoft mission is a software's cloud and it's focusing on AI as well, right? Say for example MDocs, so make it amazing. So what is the agenda behind make it amazing, how they want to work on this IoT devices and the services and all. So there are many examples of that. So that would be your mission. This is how, this is our target, this is the mission which we need to achieve it. So mission को अचीव करने के लिए एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो माइलस्टोन डिसाइड करेगा, दिस इज योर माइलस्टोन, एंड based on that milestone you will be deciding your mission that we need to accomplish, right? And then goals, the finally is your goals. So goals is like governance, how you can reduce the cost, which is increasing, which is drastically increasing, where we can reduce the cost, where we can put our more efforts, where we need to invest more. So the complete governance part, your compliance part, so the complete statement of the organization purpose, right, and the reason of existence. So this is about the goal. I hope this is very much clear, right? We can discuss more on that. So but we have a lot of slides, so we need to move further. But मैं आपको यहाँ पर हर चीज डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि अगर आप फर्दर रेफरेंस भी नहीं लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, so goal mission objective, we are in the risk management chapter domain 1 where we are discussing about goal mission and objective. Now after that, aligning security with your goal mission and objective, your first part is clear, right? Your goals mission and objective is ready.
Now information security can be aligned with organization goal, mission and objective. कैसे होगा? So there are certain ways. First is reducing risk, and second senior management support. So how you gonna reduce the risk, right? Risk, you will be preparing for the risk management. In order to reduce the risk, you require a risk management team, right? Who will actually participating, who will be working on your risk governance part to ensure that they have a proper, assignment. They have a proper, what we call, the risk analysis, risk assessment, and they focus on what the risk to be accept, what risk to be mitigate and transfer, so forth. So we require risk, right? So protect the organization asset and process through approach activities and control. Then accordingly we can decide about the control, what control we require, what would be the countermeasure and all. So we need to be aware IT assets and goal, mission and objective of the organization. Now senior management. So senior management, it's like once we have target to reduce the risk, who's going to own it? So own it, accountability. So the senior management would be accountable for. So this, you might get the question about this, accountability, that XYZ scenario is going on and they have their risk related issues, and then who's gonna own it. So you will have multiple options. You will also have senior management, so you can take senior management. That's the correct answer, right? So own it, accountability. So senior management will add. So it adds security professional, to involve in add influence the organization's core activities, and it also helps to identify priority task and divert resources to achieving security goals. Of course, right? So what are the tasks are there, and accordingly you will align the resources to achieving the security goals, right? So first we understood about the goal, mission, objectives, and how we are going to align with organizations. uh, these three tasks, how you gonna align with your organization. So this is how we can align, reducing the risk and then management. Now tell me here, like Kevin has understood the importance of mission, goal and objective, and his organization, and the importance of aligning its security of to these. He reads the following statement to the company website. Now, XYZ Worldwide Inc. will pursue the foster opportunity for growth and achievement for its employees and stakeholders, with the customer being the focus point. So in the mission, goal or objective statement, is this mission, goal or objective statement? Pause the video and just think about it. So your answer would be it's a mission, right? It's a mission, right? This is something what we have studied about, right? Okay, now let's talk about control framework. Okay, control framework. So what do you understand by control framework? So control framework, here you can see that it's a data structure that you know compresses a set of an organization internal controls. Okay, that is the practice and strategy built to enhance business process and minimal risk, right? So here you can see that you have set of control and protect data within the IT infrastructure of the business or another entities. So the control framework acts as a comprehensive security protocol that protect against fraud or theft from spectrum of outside parties, including hackers and other kinds of cyber attack. Now let's understand, the we are talking about control framework. स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड दिस थ्री लाइन, इफ यू डोंट इवन अंडरस्टूड इट्स ओके. I'll tell you, the control framework is basically your security controls, and this is not something you can do it your own. There are certain you know regulatory which we need to follow, or based on the organization which they follow. So example, your COBIT. COBIT stand for Control Objectives for Information and Related Technology. So here you can see that at the end COBIT IT is mentioned, information technologies, right? So here we will be discussing about more in that, what it's all about and all. And then you have ISO as well, ISO
27999 and then 27001, right? So there are five principles, right, of ISO. There are many rules are there, and for COVID, how COVID can help IT to help business. IT can help business. Let's take a approach of COBIT, standards. So we can understand about the COBIT, how it actually works. This will help for your IT business. ISO can help us your, all the principles, how it actually the complete framework works. So let's understand in a deep point of view COBIT, right? So issued by ISACA, Information System Audit and Control in Association, right? Now, what is that? This is basically which is a non-profit organization for IT governance that we should know. Non-profit organization for IT governance. Main function of COBIT is to help a company map their IT process, right? As I said, that best practice of the IT information technologies. So this is the basic purpose of COVID. Now, COVID principle, as I said, there are five principles. So, like meeting stakeholders' needs, covering the enterprise end to end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, separating governance from management, right? So this is how it is. Now, ISO 27001. So this is about in 2013, right? So you can understand about 2007 and 2000 to 2000 27001 and 27001 domains, right? So here you can see that, and internationally recognized and structured methodology dedicated to information security. So ISO जो framework है, this is globally recognized standard है for dedicated for information security. So everyone should at least go through this ISO 27001, where it's given about the complete framework, complete strategy, how it actually works and all, right? So it basically designed for security, they will talk about your physical security. So for physical security, I can just give you some of the example that CCTV, guard, biometrics parameters for physical security, and check all the aspects, whatever is possible, implement of these controls, the effectiveness of the control. That's all you will understand in this control. So that's something you should aware about this. What is ISO 2007 one domain, right? Now in the security policies, organization for information security, human resource security, asset management, asset control, cryptography, and there are many things you will understand in this domain, right? So this will actually really help you to give you the better visibility, giving a better perspective about this. So this is about COVID and ISO. You must remember, because this is how it's all given about. You can just walk through if you want, because we are going to start about due care and due diligence, which is very, very important, very, very, very important, right? Okay, so due care. What do we understand by due care? Due care is the process, or the processing, the uh, individual activities, and maintain the due diligence efficiently. I'll tell you how it actually works. When we're talking about, I can give you an example, because here you will see in the next slide, there's some examples given here, and next slide you have our due diligence also. So let's I can give you both the examples so you will have better understanding. So example, you know when we're talking about due diligence, diligence is establishing a plan, a policy, or a process to protect the organization, protect the interest of organization. Okay, plan banaya, policies banaya, process banaya. Now why you have created this? To protect the interest of the organization. Again the example, due diligence समझते हैं. Due diligence is the developing a formalized security. You are developing a formalized securities, right? um, Streamline and structure which contain
the security policies, standards, as I said, that baseline, guidelines, and the process, etc., etc. So this is due diligence. Now, when we're talking about do care, so do care is the individual activity which you need to perform. The task which is given, the task itself is a due diligence, and in order to work on that task, process on that task is a do care. Okay, I hope this is giving you the more clarity. Now you can see the example of do care also. Training employees in security awareness is do care, right? Because you're doing training. You know, mandating statement from the employees stating that they have read and understood appropriate computer behavior. Okay, and developing firewall in the organization. Now, due diligence, as I said, that is an act of understanding and investigating the risk the compliance faces, right? Means practicing the act, as I said, that practicing the activity that maintain the do care the efforts. Okay, so hope you have understood, right? Due diligence क्या होता है, do care क्या होता है, right? So this is how it is. It will give you the visibility about this. Now let's see some of the example of do care as well. Due diligence, sorry. All right. So hope you have understood. So if I'll give you the basic example, do care, just remember do care like do correct things, do correct ongoing things, right? Responsibility, you are responsible, protection of assets. When we're talking about due diligence, do detect means execution of do care. Any execution of do care is due diligence, maintaining control over the time. You are maintaining, you are taking care of the things is due diligence, right? So this is how it actually works. Now we will be talking about determining compliance and other requirement. Okay, so let's focus on that part also. Okay, so your SLA, service level agreement, it's formally defined level of service provided by an organization. It could be related to the cloud provider and your client. So let's say you are running an operation, okay, you have a client, so you have an engagement. I can give you the basic example. SLA may define what it actually defined. So when we're talking about confidentiality, integrity, and availability, everything comes in the SLA. And there are many examples of the SLA like security incident response, security alert delivery, security investment investigation, policy and procedure review, etc., etc. Right? So let's say, uh, you know, for example, whatsoever points you are putting, these all points you are putting somewhere. You have a KPI, you have, uh, you know, um, you have certain KPI which you have created KRI. So based on the whatever you're putting, right, you will be having some certain SLA, service level agreement, right? There's a, for example, the incident response has to be responded within 24 hours. If it goes beyond that, then you are breaching the SLA somewhere. So you have some, the SLA is somewhere the contractual agreement between client and the organization is, let's say, 99%. So 99% is your SLA. So if you're going beyond that, so on an average, on monthly basis or yearly basis, what is the percentage is coming? Say for example, antivirus. So you have installed the antivirus in all the machines, and how you will ensure that all the machines are protected with the latest virus definition. So the one who is owning this antivirus, who's working on that, that person will check the antivirus status on all the machines, right? The status, and accordingly he'll calculate it. Like 30,000 machine, out of 30,000 machine, let's say 100 machines is out of virus definition. The virus definition is not updated. So in that condition, your SLA somewhere around on 99%. Sometimes it's 98%. So this is how it's a SLA. There's an agreement between your clients and the organization operation. Same way, you have a cloud service also. So the cloud service, though it's a shared responsibility, but there's a that NDA, non-disclosure agreement, and you have some contractual deliverables signed
where you discuss and decide that, if we get the 100% availability, we require the 100% availability, which is 99%. Whenever we require any sort of sources, it should be available 24 by 7. Or if any downtime is needed, if any patching maintenance is needed, make sure that it has to be informed well in advance, a week before, so that will your SLA will be stopped. So there are many parameters will be there. What would be your uptime? Okay, what would be your service downtime, your availability? So this is how it is. So having the favorable contractual language is example of as I said that the service requirement. So you have some SLA penalties as well. The what is the window of the change management? So you, in order to run the better security, okay, if you have some SLA, you will definitely work within the SLA, right, to ensure that it's meet the company requirement, and we are under within the SLA. So in order to sometime, most of the organizations sometime to avoid the SLA, like they meet 99%, they show 100%. So what is the use of you're showing 100%, but your service is down many time in a month, right? It does happen most of the time. You are restarting the machine unnecessary anytime whenever you need it. Something is not working, you're not following the process. So this is all part of the SLA. How much your client is aware and how much you are following this SLA guidelines, that's all up to organizations and you. So this is the definition about the service level agreement. Okay, now we will be talking about managing third party governance. So what do we understand by third party governance? Here you can see that outsourcing is the subcontracting of business process to the third party company. Now what do we understand by that, right? So let's say we have some dependency. You can see that the first one, loss of control of confidentiality, information, accountability, and the control, and down is a source outsourcing. So you technically they can, but not ethically, right? You getting what I'm saying? Like let's say example, you have some engagement with the cloud. Okay, so cloud can see your data, right? They can see your data because they are the owner of the complete infra. You have just buy the service, right? You are buying the service, so they have control. They can see. So technically they can do, technically they can see, but not ethically. You getting? Ethically they are not allowed because some policy, some process which they need to follow. Okay, so that's what I'm. Then there's some accountability, there's some compliance methods. So risk associated with outsourcing. That's what I'm saying. Third party, you have a third party vendor, okay, your cloud provider. So the risk is always associated with outsourcing. So there's chances of data. For example, within your organization, you are a part of, let's say, data security. So in the data security, you have a classification, you have DLP. So in the DLP, whenever any incident breaches, you as a DLP person can see the mail, can see the complete content. So technically they can do that, but ethically they are not. You will see that in the process where the policies where you are not allowed to see anything for investigation purpose. You can see it, but not intentionally. You can see that. Now, if I can give you one more example which will definitely help you, right? About this secure outsourcing, which will give you more visibility about. There's two type of risk vendor in the cloud. Uh, First is lock-in. So lock-in means you have some technical dependency. Please understand this line. So this part will be clear. Technically dependency, and you can't move it because of this. So now you have a conflict for like you know there is some contractual obligations, contractual deliverable with your client that you are they have some dependency. Cloud, your complete data is there,
everything is there, you have some availability, your entire data is there, so you have some technical dependency, because though you are purchasing, but you have some technical dependency. It's not your infra, right? So you have some technical dependency. So in that condition, if they want to move, they want to break your contract, they want to move, then what you gonna do that in that condition, right? So if vendor deny or something wrong happened, right? So in that condition, you can't do that anything. I mean, there's some contractual delivery. You will understand in next what I'm going to explain you, right? So and then first is vendor lock-in, where you have some dependency, and then vendor lockout, where vendor is out of support due to, you know, bankruptcy or some other issues. It could be any issues where a vendor wants to, vendor is out of support, they cannot go for the further support now. So when you have these kind of concern, right? So what is the, what do we understand by this? So testing, documents, contract, okay, you should have. So there is escrow, remember this word escrow. Escrow will get secure code, when you have escrow. Let me see if you have in this slide. Okay, we do not have in this slide, this is out of, but you should know that there's a escrow. So you have cloud provider number one, and you running as an operation for any organization two, and there's a escrow. So in the situation where cloud provider wants to run, to leave your business, they cannot continue support in order to, like, vendor lock in or vendor lock out, in any situation they want to do their escrow. What it will do, escrow will get, if vendor deny or something is wrong, so you have an escrow. So you will sign with escrow, cloud will sign, both will give some amount to escrow, and escrow will having, some secure code with some documentation. Okay, so they will get secure code with the documentation. So in that condition, the company will not be in a lost in the situation of when they want to leave it, when they want to go because of XYZ reason, as I said that lock in and lock out. In that condition, you are secure, right? So escrow, you remember, there's a third party which will help your organization to, secure you somehow in terms of your operation, security, information security, IT governance, etc. So this is all about managing third party governance, how you manage it, right? And then outsourcing privacy requirement and compliance, right? So where you will be following rules set up by US, as they they are, securing. Say for example, you let me take it in this way. Let's say in GDPR. So GDPR is a European, in the European citizen. This is applicable for the European citizen. Then you have HIPAA for US, like medical documentation and all, where you follow the PHI. Okay, so health, insurance, portability and accountability act. When we're talking about HIPAA, it's a major regulation covering health data and all. So this is about the PPT which is given here. What all I want to say is that even if you're running the business in India or anywhere across the world, and if your customer in India, or you have a business which belongs to European, you have to follow the regulation meant by US governance. Okay, like HIPAA and GDPR. So you need to follow. So follow the rules which is set up by US, as they are, securing to India, because they are running the business in this India. So you need to follow that. This is about offshoring, privacy requirement and compliance. Okay. Now let's discuss about legal and regulatory issues, um, information security in a holistic context. This is very important. So you will understand. Let's start with computer kind. So you will get some sort of idea about what in the next slide we are going to discuss about. So you know about the, the cybersecurity definition, right? Basically offense that are, committed against individual or group, or individual with a criminal motive, intentionally, unintentionally harm or reputation of the victim.
uh, or any organization. So you know about that, right? You also know about that introduction to computer crime. Okay, so let's walk through it. Any crime that involves a computer and a network, computer related crime has increased due to, you know, connectivity of internet, of course, internet connectivity. Now, low cost of computational resources, very low resources. Example, cracking the password, copyrights, infringements, child pornography, and child grooming. So there are many examples of internet. When you have internet, what are the worst cases you can come across? You don't even know, right? And so this is all about, we are going to understand the introduction of computer crime. So this is how this is actually happened. So in that condition, what we will be talking about intellectual property, which is very important for your exam point of view, and you should know that. Okay, so intellectual property एक law है, right, which is designed to protect both your tangible and intangible item and properties. Now tangible क्या होता है? Tangible and intangible. Tangible is a physical, you can touch, anything which you can touch. um, your office ka printer, your building, okay, and any physical security which you can touch. This is all about your tangible. And intangible, like the for example, which you cannot touch, like copyrights you cannot touch, patent you cannot touch, right? Trademark you cannot touch, or any digital information which you cannot touch, that is tangible. So that's something we will understand. The main goal is to protect properties from those who wants to copy or use it without due compensation to the inventor or creator. Okay, so let's understand about industry properties and the copyrights in the law categories. So inventions or pattern, trademark, industry's design or geographically indicator of source. This comes under industry properties. Okay, we are understanding about IP लॉ कैटेगरीज. दस टू कैटेगरीज इंडस्ट्री प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेंशंस, इंडस्ट्रीज डिजाइन एंड जियोग्राफिकल. एंड सेकंड आता है कॉपीराइट. कॉपीराइट्स एनीथिंग, यूट्यूब आपका चैनल है, आपका नोवेल है, पोएम, प्ले, फॉर्म, म्यूजिक, प्ले, एनीथिंग, ड्राइंग विच इज you own it, it's yours only, right? Yours only. So that's under the copyright. We will be detailing, we will be understanding in deep, so you will have the more understanding about it. So let's first talk about the patents, right? Patent क्या होता है? Patent, it's like a invention. You're doing any kind of invention. Okay, so patent grants to the owner a legally, enforceable rights to execute, exclude others from practice and invention. So anything, any किसी प्रकार का आपका invention है, anything which you have, it's applicable for 20 years at least. 20 years के बाद you can put it in public place, which is absolutely fine, but it should be there at least for 20 years, right? So patent जो रहता है protects new, useful and non-obvious inventions. Okay, after the expiry of patent, the invention is open to put it in the public, as I said, right? So there these requirement that needs to be satisfied, जैसे कि ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, इन्वेंशन मस्ट बी यूजफुल. ऐसा नहीं है कि पेटेंट आपने कुछ भी डाल दिया और वो यूजफुल, अरे इट्स अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी लॉ. नो, so your invention should be useful, it should some meaningful. Your original idea, it should not be you have copied from somewhere, it should be original idea. Okay, the invention must not be obvious, it should have some meaning, as I said. Okay, so that is about this, the patent. When we talking about trademark, okay, so trademark, what do we understand by the trademark? So in the trademark, two things you remember. One is service mark and one is trademark. Okay, trademarks जो law रहता है, which basically protect against basics में समझते हैं, ठीक है, like a slogan. Okay, slogan.
So slogan is like you have a Nike. Okay, so Nike has and the Philips. So Nike क्या बोलता है, just do it. Okay, Philips as something make things better, right? Let's make things better, something like that. So this is the slogan which they have. Okay, it's kind of that you can understand that that's a given example. So इसमें जो ट्रेडमार्क रहता है, इट्स ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट्स टू द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क. अब इसमें क्या होता है, जो ट्रेडमार्क रहता है ना, इट टेक्स 1 year. Trademark are registered with a governance registrar, okay, which takes one year, and one trademark must not be similar to another one. Okay, अगर आपके पास multiple trademark है, it should not be similar to each other, or same should not be similar with others trademark as well, right? So trademark should not be, descriptive ऑफ द गुड्स. ऐसा ट्रेडमार्क होना चाहिए जो आप बेच रहे हो या जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड. इट शुड नॉट इंडिकेट दैट यू आर डूइंग बिजनेस फॉर दैट. ओके, तो वो उसका क्या होगा, एक प्रमोशन प्रमोट कर रहे हो समवेयर. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट? गुड्स और सर्विस दैट यू ऑफर उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो आपका बेसिक ट्रेडमार्क आपका होना चाहिए. ओके, परफेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपीराइट्स. ओके, सो टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट्स भी आता है. So copyrights में what you can understand, a copyrights covers the expression of ideas, complete expression of ideas. So आपने एक book लिखा, you have some book, that's your thoughts, you have created. Now you have understood the content, you have some understanding, and based on you created a notes or you created some YouTube videos that belongs to you. You created some books or pictures, that's complete your expression of ideas. उसको कोई चुराता है, and if someone is trying to copy that content, it's called copyrights act against intellectual property, IP law. Okay, so the duration of protection is longer, it actually longer. um, last either for 70 years after the the last author death. Okay, and this is what actually 70 years, that's something I remember. So here it is written also, work of one or more author are protected until 70 years and after the death of the last serving author. Okay, उसके बाद क्या रहेगा, 95 years from the first publishing date. अगर आप जिंदा हो तो 95 years from the first publishing date or 120 years from the date of the creation, whichever is shorter, कर सकते हो. और अगर डेथ हो जाती है, इफ इज दैट पर्सन इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो 70 years तक रहेगा वो. ओके, इट विल वर्क टिल 70 years. दैट इज हाउ द इट्स ऑल अबाउट. ट्रेड सीक्रेट से क्या करते हैं, ट्रेड सीक्रेट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला हो गया आपका, पेप्सी का कोई फॉर्मूला हो गया, कुछ न्यू इन्वेंशन हो रहा है, गवर्नमेंट्स का न्यूक्लियर्स का कुछ आइडिया हो गया, कुछ प्रॉम्प्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं लीक होता है, तो वो ट्रेड सीक्रेट में आ जाता है. ट्रेड सीक्रेट लॉ प्रोटेक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज टू use or disclose. Okay, so that's I know, but what is it is, it's a kind of any information, any secret information formula, and any business related talks like secret something that is proprietary of a company and important of which related to survivors or profitability, ह्यूमन से रिलेटेड हो सकती है एंड अलग अलग प्रकार से हो सकती है. ये कुछ एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, सच एस कोक हो गया, पेप्सी हो गई, आपका मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूला आपने नया तरीके से बनाया है, सोर्स ऑफ कोड हो गया, प्रोग्राम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये जो रहता है वो आपका ट्रेड सीक्रेट में आ जाएगा. होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, मैं एग्जांपल भी आपको देते जा रहा हूँ, दैट विल रियली हेल्प यू. नाउ डिजिटल मिलीनियर कॉपीराइट्स एक्ट, क्या समझते हैं इसके, डीएमसीए. डीएमसीए आप इतना समझ लो कि कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि एनीथिंग अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन इट्स नॉट कॉपीराइट, एनीथिंग विच इज रिटन. सो एनी एनी कोई वेबसाइट है, इन इन दैट वेबसाइट
यू साइन इट्स एनडीए, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, आप साइन करते हो उसको, राइट। सो वो आपका जो रहता है वो आपका डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट्स एक्ट के अंतर्गत आता है, डीएमसीए के अंतर्गत आता है। सो एनीथिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। सो ये जो एक्ट रहता है ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के थ्रू आता है, डीआरएम लॉ के थ्रू। सो द इंटेंट बिहाइंड ये रूल्स का was to create an updated version of the copyrights law, updated version of the copyrights law to deal with the specific challenges of regulating digital marketing. So nowadays क्या होने लगा है कि आजकल पेपर वर्क नहीं होता है, there are many things in YouTube also, and there are many websites are there where आप कैसे कॉपीराइट्स कैसे क्लेम कैसे कर सकते हो, नहीं बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उसकी कंडीशन में डिस्क्लेमर रहता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट रहता है, जहां जिसको आप टिक करते हो, टिक करने का मतलब यू अग्री करते हो एंड देन यू सबमिट इट। वंस यू डू दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, एंड इफ एनीथिंग इज कॉट यू पार्ट ऑफ दैट। सो डिजिटलाइज ऐसे कर सकते हैं आप। तो डिजिटल से आपको याद रखना है, कुछ भी डिजिटल कॉपीराइट्स के बारे में हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट डीएम सीए के बारे में बात कर रहे हैं। और जो बेसिक कॉपीराइट्स के बारे में, इट्स ऑल पेपर रिलेटेड हो सकता है और योर डिजिटल रिलेटेड एवरीथिंग, बट स्पेसिफिक विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक चैलेंजेस और रेगुलेटेड डिजिटल मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ टेक डाउन नोटिस भी इसका रहता है। सो आप टेक डाउन नोटिस भी रहता है, नोटिस टू रिमूव द कॉपीराइट्स वर्क, आप वो रिमूव कर सकते हैं व्हेन यू फील दैट इट्स नॉट रिलेटेड एट ऑल। नाउ टाइप ऑफ कॉपीराइट्स प्रॉपर्टीज लॉ के बारे में अगर समझते हो तो उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, स्ट्रिंग रैप लाइसेंस होता है, क्लिक रैप लाइसेंस होता है, एंड क्लाउड सर्विस लाइसेंस अग्रीमेंट होता है। अगर ये सबको देखोगे तो यूला यूला करके आपका आता है विच इज एंड यूजर एग्रीमेंट दैट यू नीड टू डिस्क्लोज विथ एनी सॉफ्टवेयर इन अ प्लास्टिक रैप पैकेजिंग के साथ रहता है। सो वंस the end user opens the packet, the EULA is in effect, वो जो शुरू हो जाता है आपका। सो कहीं ना कॉन्ट्रेक्चुअल लाइसेंस एग्रीमेंट, इट इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सॉफ्टवेयर वेंडर एंड द कस्टमर के बीच में रहता है कि आप उसको मेक श्योर वो लाइसेंस को आप अपनी कंपनी के लिए यूज करोगे, बाहर आप विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन इट विल नॉट बी unnecessary used or someone employees will be using personally etc. डिसरैप लाइसेंस के बारे में टाइप ये जो रहता है ये बेसिकली यूज्ड इन कनेक्शन ऑफ विथ सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में वो बेसिकली बात करते हैं। क्लाउड सर्विस अग्रीमेंट तो हमें पता है, क्लाउड सर्विस आपका क्लाउड वेंडर और आपके बीच में एक अग्रीमेंट रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आपके पास है एज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विल नॉट बी लीक्ड और विल नॉट बी used without any reason. Now let's talk about imports, export, the control and trans-border data flow. So ये क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि ये भी यूएस गवर्नमेंट का है। ओके, यूएस गवर्नमेंट का होता है कंपनी प्रोडक्ट not be allowed on any US government computer system. Okay, कंपनी प्रोडक्ट जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है not to be allowed on any US government computer system, ये उनका डेटा फ्लो रहता है। ठीक है, दे इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर कंप्लायंस विथ लोकल लॉ, वहाँ का लोकल उनका खुद का रहना चाहिए। ठीक है ना। सो उसमें यूएनएससी आता है जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रहता है, वो इम्पोज करते हैं कि सेक्शन ऑफ एनी कंट्री एज वोटेड ऑन बाय मेंबर्स मेंबर्स नेशन ऑफ द काउंसिल ड्यू टू द सेक्शन। सो ये जो टेक्नोलॉजी रहेगी दैट बेसिकली ट्रांसफर टू दीज कंट्रीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, वेरी वेरी प्रोहिबिटेड। नाउ ओईसीडी जो प्रिंसिपल रहता है प्राइवेसी प्रिंसिपल, इसको समझते हैं। ये एक्चुअली कैसा रहता है कि आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी एक ग्रुप है 34 मेंबर्स का कंट्री दैट डिस्कस एंड डेवलप इकोनॉमी एंड सोशल पॉलिसीज, जिसके बारे में बात करती है। ठीक है ना। सो इसके कैसे रहते हैं, 8 लॉज रहते हैं, 8 लॉ। ओके,
फर्स्ट जो रहता है कलेक्शन लिमिटेशन, तो किसी भी चीज का एक लिमिट रहेगा, आप ऐसे समझ लो। ओके, सो पर्सनल डेटा शुड बी obtained by law and the fair means and where appropriate with the knowledge or consent of the individual, बहुत ही लिमिटेड रहेगा। देन उसके बाद आता है आपका डेटा क्वालिटी। पर्सनल डेटा शुड बी रेलेवेंट, नेसेसरी, accurate, complete and up to date. Data should be up to date. Okay, we will not accept any the old data which is not updated, so data should be updated. And then after, purpose specific, इसका purpose क्या है, what is the purpose of for which the data is used should, like the principle, be specific at the time of the collection. And then use limitation, use limitation by, if you're using third party है आपका, so I can tell them कि how you gonna use my data. My data should be secured and all, though they following, but this is how the use limitation, how you gonna use it. Ethically you cannot, technically you can, as I said that, right? So ये इसके इसके प्रिंसिपल आते हैं। एंड देन इसके बाद जो मैंने बताया 8 है, तो ये हमने 4 बात की है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी सेफ गार्ड। योर डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड आपका सेफ गार्ड रहना चाहिए। ओपननेस, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू द इंडिविजुअल, सबको पता होना चाहिए क्या डेटा है, कैसा क्या है, डेटा का कंटेंट नहीं, बट दे शुड अवेयर अबाउट व्हाट रेगुलेशन स्टैंडर्ड यू आर फॉलोइंग। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कुछ you have a right to access personal data and have the data erased, rectified, completed and amendment. And then accountability, कौन इसकी responsibility लेगा, who will take care of that. So data controller should be accountable for complying with the implemented measures. This is how it is. Now very very important, GDPR. Okay, let's talk about GDPR. So जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा मैं आपको जो मैं बताऊंगा आप उसको समझ लीजिए जनरल डेटा के बारे में। एनी पर्सनल डेटा इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जीडीपीआर विच कवर्स एज मच वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स सोशल मीडिया का पोस्ट हो गया, आपकी लाइफस्टाइल हो गई, फोटोज हो गए, आपका एक्सपीरियंस हो गया, और आईपी एड्रेस हो गया आपका। अब आईपी एड्रेस क्यों, आईपी एड्रेस जो कंप्यूटर यूज करता है उसके कुकीज के थ्रू यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा आपका आईपी एड्रेस है। सो द पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपीआर। ओके, जीडीपीआर। और इसमें सबसे दूसरा पॉइंट नोट करिए, कस्टमर शुड बी यूरोपियन सिटीजन। कस्टमर जो रहेगा वो यूरोपियन सिटीजन रहना चाहिए, या तो कस्टमर यूरोपियन सिटीजन रहेगा या उसका जो बिजनेस है वो यूरोपियन सिटीजन से मैच करता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद एक और पॉइंट नोट करिए कि ऑल पीआईआई, व्हेन हम वी आर, जैसे हिप्पा में हम पीएचआई बात करते हैं, वैसे जीडीपीआर में वी टॉक अबाउट पीआईआई, राइट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। सो ऑल पीआईआई इज पर्सनल डेटा, ऑल पीआईआई इज पर्सनल डेटा, उसके बाहर कुछ नहीं है। बट नॉट ऑल पर्सनल डेटा इज पीआईआई। ऑल पर्सनल डेटा नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा, आपका नाम पर्सनल डेटा नहीं है आपका, बट आपके नाम के साथ आपकी एज और आपका सरनेम और आपका एड्रेस जोड़ दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है, तो वो पीआईआई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रिमेंबर, ऑल पीआईआई इज नॉट पर्सनल डेटा, बट ऑल पर्सनल डेटा इज पीआईआई। ठीक है, सो यही रहता है इसमें। मैं सेकंड में बताता हूँ कि कंपनी दैट कलेक्ट डेटा ऑन सिटीजन इन यूरोपियन यूई countries will need to comply very strictly this rules for protecting customer data. Okay, which is started I think May 25, 2018. Non-compliant organization may face administrative fine up to 20 million, $20 million, और up to 4% ऑफ एंटिटी ग्लोबल टर्नओवर। जितना कंपनी का टर्नओवर रहेगा 4% आपको पे करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग दैट फाइनेंशियल विच एवर इज हायर। तो सोच लो, जीडीपीआर जो रहता है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, बट
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जीडीपीआर फॉलो होता है बट इट कैन बी कस्टमाइज्ड. हिप्पा कैन बी कस्टमाइज्ड. ओके, कोविड कैन बी कस्टमाइज्ड, और आईएसओ 27001 टू और आईएसओ 31000, these all things can be customized but customized in such a way which follow under this regulation. Okay, so this is how it actually works. अगर आपको पेनल्टी लगता है तो वो बहुत कॉस्टली होता है. नाउ जीडीपीआर में हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिपोर्ट डेटा ब्रीचेस. अगर कोई डेटा ब्रीचेस होता है तो 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर बताना चाहिए. राइट टू बी फॉरगॉटन जो एक्ट होता है, ओके, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है. राइट टू बी फॉरगॉट, ये जीडीपीआर के लिए हमेशा रहता है, करेक्ट रहता है. राइट टू बी फॉरगॉट अगर आप 72 आवर्स के अंदर अंदर बताते हैं विच इज वैलिड, ओके, अप टू विल बी कंसिडर एज अप टू डेट. Companies must also allow user to export their data and delete. Okay, export data and delete it. So ये सब चीजें जो रहती है रेगुलेशन के अंदर आती है. जो मैंने बताया अंडर द राइट टू फॉरगॉटन प्रोविजन होता है. पीपल who don't want certain data about them online can request company to remove it. राइट टू फॉरगेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि डेटा ऑनलाइन रहे, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो क्लाउड हो या एनीवेयर रहे, अगर मैं नहीं चाहता हूँ वो, सो दे नीड टू डिलीट इट, दे नीड टू रिमूव दैट डेटा इमीडिएटली. दैट कम्स अंडर जीडीपीआर राइट टू फॉरगेट के अंदर. ओके, नाउ जीडीपीआर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेटा सब्जेक्ट, ओके, आप समझ सकते हो डेटा कंट्रोलर, डेटा प्रोसेसर, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं तो एक आइडेंटिफाई नेचर पर्सन जो क्या करेगा, हु कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in particular by reference to an identifier such as name or identification number, location data, online identifier, anything, your physical, psychological, genetic, mental, economic, culture और social identity etc. ये डेटा सब्जेक्ट है. जो मैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो डेटा सब्जेक्ट के अंदर ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. फिर डेटा कंट्रोलर होता है. डेटा कंट्रोलर करेगा एक लीगल एंटिटी रहेगी जो हु ईदर अलोन और ज्वाइंटली डिटरमाइन द पर्पस फॉर द मैनर इन विच पर्सनल डेटा इज और विल बी प्रोसीड. ओके, नेक्स्ट आता है आपका डेटा प्रोसेसर. डेटा प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर ऑन बिहाफ ऑफ द डेटा कंट्रोलर, डेटा कंट्रोलर के बिहाफ में, लाइक थर्ड पार्टी, बट डज नॉट कंट्रोल द डेटा. वो कंट्रोल नहीं कर, डेटा को कंट्रोल कौन करेगा, डेटा कंट्रोलर करेगा. ठीक है, उसको डेटा कंट्रोलर ही करेगा. सो वो क्या करता है, कंट्रोलर जो डिटरमाइन करता है द पर्पस फॉर एन मैनर इन विच पर्सनल डेटा इज और विल बी प्रोसेस, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, विल बी प्रोसीड. और जो डेटा प्रोसेसर रहता है वो क्या करता है, डेटा प्रोसेसेस डेटा ऑन बिहाफ ऑफ डेटा कंट्रोलर, जैसे थर्ड पार्टी रहती है. तो हम ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना काम थर्ड पार्टी को देते हैं, राइट. तो प्रोसेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है. एक्चुअली जो डेटे पे काम करता है, जो वर्क करता है, वो थर्ड पार्टी वेंडर काम करता है बट हमारी रिक्वेस्ट पे काम करता है, ऑन बिहाफ ऑफ, हमारे बिहाफ में वो काम करता है, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज, द डेटा कंट्रोलर एंड डेटा प्रोसेसर वो आपके बिहाफ में काम करता है एंड कैन नॉट चेंज द पर्पस और यूज ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा. वो कुछ मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकता, वो वही करेगा जो डेटा कंट्रोलर ने बोला है उसको करने के लिए. उसके बाद सुपरवाइजरी अथॉरिटी आता है. ठीक है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी ईयू मेंबर स्टेट रहता है जो दैट हैज बीन टास्क टू एनफोर्स जीडीपीआर एंड मॉनिटरिंग करता है, उसको एप्लीकेशंस को मॉनिटरिंग करने का काम करता है. ओके, नाउ डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल में आप देख सकते हो कि उसमें लॉफुल फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, लिमिटेशन के साथ डेटा मिनिमाइजेशन होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, स्टोरेज का लिमिटेशन कितना रहेगा, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहेगी. ये डेटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल रहते हैं अंडर जीडीपीआर. ओके, परफेक्ट. सो एंड डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ फुलनेस फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, आप यहाँ देख सकते हो कि पर्सनल डेटा रहेगा शैल बी
proceed lawfully, fairly, okay, transparency. It should be ensured that relation to the data subject, everything has to be done properly with proper law. Purpose limitation क्या होना चाहिए उसका? पर्सनल डेटा shall be collected for specific explicit and legitimate purpose only. उसके अलावा उसका कुछ unnecessary further process नहीं होना चाहिए उसका. ओके, डेटा मिनिमाइजेशन में क्या हो जाता है आपका? what is necessary in relation to the purpose for which they are processed. क्या रिलेशनशिप है वो डिफाइन करेगा. डेटा का एक्यूरेसी क्या होना चाहिए? पर्सनल डेटा जो आपका रहता है उसका कितना एक्यूरेट है? व्हेन नेसेसरी इट शुड बी अप टू डेट, इट शुड बी कीपिंग अप टू डेट, एवरी रीजनेबल स्टेप मस्ट बी फॉलो एंड एक्सेट्रा. स्टोरेज लिमिट के बारे में बात किया जाता है कि डेटा सब्जेक्ट फॉर नो लॉन्गर देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ विच पर्सनल डेटा जो प्रोसेस करते हो, जो आप स्टोर करते हो, तो उसका लिमिटेशन होना चाहिए आपका. देन इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वी ऑलरेडी अवेयर दैट इट द डेटा शुड बी unaltered and it should not be disclosed, non disclosure and all agreement sign होती है. Right. So that's it about today's topic, right? Where we have understood the many concept. In next video, we will be talking about understanding requirement for investigation type. इन्वेस्टिगेशन टाइप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टिगेट देखेंगे. सिविल इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देखेंगे. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग सम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या रहते हैं, and we will be talking about security policies, business continuity planning, और भी कुछ रहेगा. तो इसके बाद 2 वीडियोस रहेंगे जहां पर आपका रिस्क मैनेजमेंट डोमेन 1 कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी मच सफिशिएंट. ओके, और अगर वीडियो पसंद आता है आपको, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते जाऊं. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मैं आपको क्वेश्चनरीज भी दूंगा, साथ में साथ प्रैक्टिस करते जाइए. सो दैट विल हेल्प यू to prepare your CISSP exam. Thank you so much, guys, and you have a wonderful day. Take care.